Before starting the class, I wish you a very happy New Year 2023, and I pray to God, Lord Jagannath, to protect you from every of your problems and protect you from every disease and keep you fit and fresh mind. Thank you all. Sit down. So, after how many days again we came to our class? 10 days, no? Achha. After the annual function, that vacation was there. Okay then. So, today we will again go to our mainstream and we will read chapter 14. Chapter 14, that is perimeter. Shortly I am writing perimeter and area. Perimeter and area of plane figures. So already I have said, but still once again I am just saying all these things. Perimeter and area of plane figures. How many plane figures do you know? So plane figures. Plane figures. What are the plane figures? Saraswat, say one. Square. Huh? Square. Square. Before that, I am saying it is triangle. Then another Saraswat, square. Panda, say one. Rectangle. Rectangle. Then Vishwajit, say one. Circle. Circle. Okay, no problem. Circle. Then Sarisha, say one. So many others, so many. Parallelogram. ये भी एक. This is also a plane figure. Then Aditri. Yes. Rhombus. Then Simran. Say one. Kite. Then Shikha. ये प्रज्ञा ना क्या नाम? हाँ, मामिना. Trapezium. This is also one. Another. Last. It is for Shikha. Say. Anyone? Another plane figures, if any. Square, rectangle, parallelogram, rhombus, kite, trapezium, circle, then hexagon, polygon. A polygon. Yes, you may say these all are polygon. Hexagon, pentagon, anything? Pentagon. Whose 5 sides are there? Pentagon. Okay. So if a closed geometrical figure will have 5 sides, then that is called a pentagon. Okay, so these are the plane figures. Now, we will read the perimeter and area of these figures. So, first we will read perimeter. Perimeter. What is perimeter? The sum of length of outer boundary of a closed geometrical figure is known as
perimeter. So, perimeter means the sum of all the boundaries, sum of all the length of all the sides of a closed geometrical figure, that is called the perimeter. Then what is area? Area, definition, the surface occupied by a figure, the surface occupied by a figure is called its area. So, we will read about the area and the perimeter of all these things. Finished? Write quickly. So, one by one, we will read about the area and perimeter of different figures. But in your book, it is rectangle and square. Only rectangle, square, yes, parallelogram, rhombus, yes, area of triangle is there. So, circle is there, everything is there. So, we will read one by one of all these things. So, first we will read about the rectangle. Area of rectangle. So, rectangle, first triangle, serially I am just saying you triangle, then rectangle, then square, then rhombus, then parallelogram, then circle. What it is given in your book, those things I am going to say here. Now, one by one I will say the area and perimeter. So, area of a triangle, which is means later on in exercise 14C, 14D like that it is there, but I am at one place I am writing all these things. So, area of a triangle, there are two formulas, but in your book for your class it is only one formula is there. When we will go to standard 9, 10, you will know about another formula, but from today, I am just saying also the second formula also. So, there are two formulas to find the area of a triangle, that is half into base into height. Suppose in a triangle, this is a triangle ABC. From any vertex, if a perpendicular line will be drawn to the opposite side, then that is called the height, altitude or height. And upon which side the height will be drawn, altitude will be drawn, that will be taken as the base. So, half into base into height, by that you can know, you can calculate the area of the triangle. And area always written in square unit, means either it will be in millimeter square, or it will be in centimeter square, or it will be in meter square, or it will be in kilometer square. So, the area always are written in square unit, whatever may be the unit. The unit may be millimeter, then it is mm square. If the unit is in a question, unit is given centimeter, then the area will be
cm square. Understanding or not? Another formula to find the area of a triangle. Now I am saying the area of triangle. Another formula is there. You write it. Later on, I will say you. So another formula to find the area, that is square root of, write down, square root of s into s minus a into s minus b into s minus c. Though in this class you don't have this formula, but still I am saying rectangle. Another is your root, square root of s into s minus a into s minus a b into s minus c. Suppose if this is a triangle, here this side is 5 centimeter, this side is 6 centimeter, this side is 7 centimeter. Here, when the base and height will be given, then you can use that half base into height formula. But when 3 sides of a triangle will be given, then you can use this formula. And this is called Heron's formula. Heron's formula. This is called, its name is Heron's formula. Root over s into s minus a into s minus b into s minus c. तो ये s क्या है? What is this s? ये s को कहते हैं सेमी पेरीमीटर, मीन्स पेरीमीटर का आधा. और इसका वैल्यू क्या है ना? तीनों साइड्स a प्लस बी प्लस सी बाई 2, पेरीमीटर का आधा. ठीक है ना? और ए बी सी क्या है ना? ये जो साइड्स को, एनी वन, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी. सो semi perimeter, after finding the semi perimeter value, then putting the semi perimeter value and all the sides, we can find the area of a triangle whose 3 sides will be given. I am doing this question. Here, what is the s value? This plus this by 2. 7 plus 5, 12, 12 plus 6, 18. So it is 18 by 2, that is equal to 9. ठीक है? s का वैल्यू मिल गया 9. नाउ एरिया क्या होगा? तो एरिया इज इक्वल टू जो फॉर्मूला s मीन्स 9 इंटू s माइनस a मीन्स 9 माइनस 5, that is equal to 4 into s minus b means 9 minus 6 means s minus c means 9 minus 7, that is 2. Now this is equal to, not multiplying, ऐसे ही रखता हूं. ये जो 9 है, 9 तो 9 होकर रहेगा. अच्छा ठीक है, 9 is 3 into 3. ये जो 4 है 2 into 2. सबको पूरा प्राइम फैक्टर को मैं स्प्लिट कर दिया. Now when we will find the square root of a thing, then from a pair of digits we will bring 1 outside the square root symbol. You know or don't know? So here double 3s are there. I brought out 1 3. Here another pair of 2s are there, so brought it out. Now ये दोनों सिंगल है, तो उसको मैं ऐसे ही रख लेता हूं. तो इट इज इक्वल टू 6 रूट 6. 6 रूट 6 क्या है? cm स्क्वायर. रूट 6 का वैल्यू तुम निकाल सकते हो. यू कैन फाइंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रूट 6. आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रूट 6, you can get this answer in decimal form also. So understanding? So when 3 sides of a triangle will be given, then by using Heron's formula, which is root over s into s minus a into s minus b into s minus c, by using that formula you can calculate the area. Are you understanding? Yes. Then ये था ट्रायंगल के बारे में, एरिया. और पेरीमीटर, पेरीमीटर तो तीनों साइड का सम है. व्हाट इज द पेरीमीटर हियर? दिस प्लस दिस मीन्स
ये ना मैंने निकाला था 18 सेंटीमीटर, द सम ऑफ ऑल द लेंथ्स दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर. सो ये था ट्रायंगल के बारे में. यू रोट ऑल दिस थिंग्स, यू रोट. अरे ये हेरोन्स फॉर्मूला ये रोट और नॉट, अमीना? वेरी गुड. जो नहीं लिखा वो पास में जो दोस्त बैठे हैं उनके पास उनका कॉपी से लिख लो. नाउ सिमिलरली रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या फॉर्मूला? हु कैन से रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला? विश्वजीत, सिमरन. हाँ, गुड. लेंथ इंटू ब्रेथ. विश्वजीत, you could not say these things. So it is length into breadth. और what the perimeter Aditri rectangle का 2 into now ये rectangle. Similarly square का पंडा, what is the area of a square? साइड इंटू साइड और साइड स्क्वायर. एनी वन साइड का स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड 2 बार मल्टीप्लाई कर देने से हमको एरिया मिल जाएगा. बट पेरीमीटर, यस, सो पेरीमीटर 4 इंटू ए साइड, दैट इज द स्क्वायर. व्हाट इज द parallelogram? You know what is called a parallelogram? It is a quadrilateral जिसका 2 ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है. ये दिस इज पैरेलल टू दिस वन और बोथ द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. सो इन parallelogram, what is the area of the parallelogram? Good. Base into height. Base into height. Suppose ये इसका ऊपर ये height, this one. This is the height. Then this is your base. This is your height. ये जो 2 length इसी को multiply कर देने से parallelogram का एरिया मिल जाएगा. What is the area of trapezium? Trapezium, what is called a trapezium? What is called a trapezium? A closed geometrical figure जिसका 2 sides parallel है और 2 sides non parallel है. So this side parallel to this side. ये दोनों sides parallel है. So these are the parallel sides and these are the non parallel sides. And this is called a trapezium. ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है? इसका एरिया का फॉर्मूला, सपोज दिस इज योर हाइट, दिस इज योर वन पैरेलल साइड, सपोज आई एम टेकिंग इट ए एंड दिस इज योर अनदर पैरेलल साइड दैट आई एम टेकिंग बी. तो ट्रापेजियम का एरिया हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये इनटू है यहाँ. तो अगर 2 पैरेलल साइड will be given to us, then and height will be given to us, by using this formula we can calculate the area of a trapezium. लेकिन पैरेलल एरिया, ये पेरीमीटर तो सिंपली सबका क्या करना है? ऐड करना है. हाँ, सबको ऐड कर देना. दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, add all these things, you will get the perimeter. So in that is chapter exercise 14a
Already we have completed. Yes or no? Yes. Yes. 14A already we have completed. Now we will go to the 14B, exercise 14B of your textbook. Now, finished? Wrote all these formulas, things? I will ask you next class. Next class I will ask. Be positive for your study. In this, take promise, yes, I will do my best in this year. नहीं तो ऐसे एक साल के बाद साल आकर चला जाएगा, तुम जहां हो वहीं पे रह जाओगे। क्या नया कुछ मैं करूंगा, थोड़ा सा इंप्रूव करूंगा, ये सोच रखो। नहीं, मेरा इस साल में मेरा इतना ही परसेंटेज था, इस साल में ए लिटिल बिट, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसे साल पे साल अगर तुम आगे बढ़ बढ़ के जाओगे, 10-15 साल के बाद तुम बहुत कुछ कर लोगे। तो ट्राई टू डू वेल। क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 1। Look here. A 4 meter wide path runs around a field of length 130 meter. That means यहाँ क्या दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है, whose length is 130 meter, breadth है 85। दोनों साइड से 4-4 बढ़ गया, क्योंकि width दिया है ना 4 एवरीवेयर, तो दिस साइड में 4, दिस साइड में 4, मतलब here to here, what it will be 138, और यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से वहाँ तक वही है, so it is 138 meter. Understood? Amina? Here to here it is given 85. Now दोनों साइड से 4-4 बढ़ा दूंगा, इस साइड में 4, इस साइड में 4, मतलब ये पूरा कितना बन जाएगा? 85 प्लस 8, दोनों साइड 4-4 बढ़ गया ना। सिमरन अंडरस्टैंडिंग है ना? तो 4-4 बढ़ गया, मतलब 85 प्लस 8 that is equal to 93 meter. Okay? Now area of PQRS, that is equal to, it is a rectangle, that is 138 into क्या only size here only to say? Nobody is here. Which you have no attention towards this. 138 into कितना? Into? Not responding. Then area of ABCD means 130 into 85. So now this is equal to, ये दोनों को इंटू करो, वो दोनों को इंटू करो, करके मिलेगा फाइनल आंसर। इंटू कर पाओगे या नहीं? करो। It's your work. Come to the next question. Next question. Question number 4. Question number 4. An oblong field 58 meter and 30 meter wide has 2 cross roads, one parallel to its length. Oh, so एक field है, इसका बीच में 2 parallel रोड है, so this ऐसे ही है, बीच में रोड है, पाथ है, ये फील्ड है, ये है, ये जो पैरेलल इसका सब पैरेलल है, और दिस वन ये जो रोड है ये ब्रेथ का सब पैरेलल है। सो फील्ड का लेंथ दिया है 58 मीटर लॉन्ग
and 30 meter wide. So 30 meter wide दिया है. Here I am writing it is, suppose it is ABCD, naming कर देता हूँ ABCD. One is parallel to its length and two other parallel to its width. Find the area of the crossroads if each crossroads if each is 2 meter wide. 2 meter wide. So this is also 2 meter wide. Here this one 2 meter wide. 2 meter. और ये भी this is also 2 meter wide. This जो रोड है ये रोड 2 मीटर वाइड है. पूछा है कि यही रोड का क्या करेंगे एरिया निकालेंगे. सो एरिया तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रोड. दो रास्ता है. 2 ways are there. 2 ways are there to calculate the area. तो पहला है क्या करेंगे ना, ये जो है ना इसको मैंने पूरा सबको अलग अलग करके रख लेता हूँ. मतलब here I am taking one drawing one line, this one line, this is one line, this is line. तो ये बीच में क्या हो जाएगा, मुझे एक स्क्वायर मिल जाएगा जिसका each side 2 मीटर. सो बीच वाला जो ये 2 मीटर साइड ये स्क्वायर है ना. हियर टू हियर 2 टोटल था 30, ये मिडिल में है. तो 30 से क्या करोगे 2 माइनस करोगे. 30 से 2 माइनस होने से क्या हो जाएगा 28. ये 28 को 2 भाग कर दो 2 पास. मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 14. यहाँ से यहाँ तक 14. सिमिलरली पूरा का पूरा लेंथ है मेरा 58. लेकिन ये जो बीच में जो 2 मीटर है माइनस कर दो. 58 माइनस 2 कितना है. अब ये 2 भाग है तो 56/2. दैट मींस यहाँ से यहाँ तक कितना है 28 मीटर. सो ये 28 मीटर, ये 14 मीटर. यहाँ भी ये 28 14 28 14 28 14 चारों तरफ 28 15 है. तो हम क्या करेंगे, ये जो एक बड़ा सा रेक्टेंगल से मैं चारों तरफ क्या करूंगा काट दूंगा. जैसे मैं इससे पहले जो दिखाया था अभी वैसे ही हम चारों तरफ हम क्या करेंगे ना काट लेंगे. तो हमें मिल जाएगा एरिया और पाथ मिल जाएगा. तो here if you will like the previous one, if you will cut a paper fold, then and if you will cut out all these 4 smaller rectangles, all are equal. All these rectangles are equal. सबका लेंथ समान, एरिया समान है. तो काट के निकाल लेने से हमको मिल जाएगा क्या ऐसे ही एक पाथ मिल जाएगा. ठीक है ना. तो ये सब को मैंने काट के निकाल लिया. सबका एरिया समान है. तो पूरा रेक्टेंगल से ये 4 जो स्मॉलर रेक्टेंगल्स ऑल आर इक्वल एरिया निकाल लूंगा तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ पाथ. अंडरस्टैंडिंग और नॉट. तो area of path is equal to area of bigger rectangle minus area of smaller rectangle into
एरिया स्मॉलर रेक्टेंगल, ईच स्मॉलर रेक्टेंगल एक को लिया इनटू 4। चारों साइड से मैंने ये रेक्टेंगल को काट दूंगा, जैसे मैंने काट के निकाल लिया। जब हम तुमको दिखाया ना, तो ऐसे काट के अगर निकाल दूंगा, काट दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? एरिया ऑफ पाथ मिलेगा या नहीं? तो एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल इनटू 4। Now this is equal to area of bigger rectangle क्या होगा? Now 58 into 30 minus area of smaller rectangle। देखो ये 28 था और ये 14 था, so 28 into 14, लेकिन उसका साथ और भी क्या इंटू करेंगे? 4। So now this is equal to minus this is equal to 172 meters square meter। That's the answer। ठीक है ना? बस। तो बाकी जो मैंने 2 क्वेश्चन कर लिया और 4 क्वेश्चंस है बुक में ओनली एक्सरसाइज का। तो you will try these 4 questions। If any doubt will be there, you can ask me tomorrow। Okay? As quick as possible, we will finish our syllabus and then we will do revise. If we will do revise properly, then it will be better for you. Okay? So, once again, Happy New Year to all and thank you all. So, this was the class, today's class. Okay, we will meet next day. Next class.